Hello dear student, I welcome you once again in the subject concrete technology and the subject code is 1615305. Today we are going to see unit number 3, that is properties of concrete. In properties of concrete, it is your lecture number 4. My name is Daniel Swami. I am lecturer of James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. Let us discuss about the content of the lecture. In concrete technology subject, today we will see about properties of concrete. In properties of concrete topic, we will study about concrete exposed to seawater, composition of seawater. Then we will study about effect of seawater on concrete structure, theoretical aspect of seawater on concrete structure. Then we will see how to improve the durability of concrete in seawater. Let us discuss these 5 topics in detail for clear understanding. Let us start about concrete exposed to seawater. The concrete structure built in marine condition are always exposed to seawater either directly or indirectly. The coastal and offshore structure are always in the contact with seawater and there are number of physical and chemical deterioration process takes place. So concrete structure affected by seawater requires special attention. ये इंट्रोडक्शन पार्ट यही बता रहा है कि जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर जो बना हुआ है पानी के किनारा में, जो सी वाटर के किनारे में, वो जो भी स्ट्रक्चर है वो हर समय जो कोस्टल और ऑफशोर में बना हुआ है वो हर समय पानी जो सी वाटर जो है नदी का पानी वो उससे कांटेक्ट में रहता है, चाहे वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहे चाहे वो इनडायरेक्टली कांटेक्ट में रहे, और उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते रहता है. इसलिए हम लोग को स्पेशल अटेंशन देना चाहिए कि अगर कुछ भी इफेक्ट आए कंक्रीट स्ट्रक्चर पे तो उस पर ध्यान दे के हम उसको मेंटेन करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ठीक रहेगा. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सी वाटर. The 71% of Earth's surface is covered by water bodies, and in which nearly 96.5 is covered by seawater only. So the largest number of concrete structure is affected by concrete either with direct contact or indirect contact by the wind carrying seawater sprayers. Generally, seawater contains 3.5% of soluble salt by weight. The organic concentration of sodium plus sodium and that is Cl is chlorine are maximum in seawater, normally 11,000 to 20,000 mg per liter respectively. This means that जो सी का कंपोजिशन में देखेंगे तो we know that we have studied from the smaller age that Earth contains 71% of the 71% of Earth body is covered by water, and in that 96.5% is only 96.5% is covered by seawater. Only 4%, not 4%, 3.5% is only fresh water that that can be used for drinking purpose or underground water. You can think that in whole 96.5% is covered with seawater. Then we can know that our larger number of concrete structure will be get affected directly or indirectly by seawater. It directly means direct contact, indirectly means through air or wind that carries the salt, and it contains 3.5% of soluble salt by its weight, and ionic concentration of sodium and chlorine are maximum in seawater. So normally 11,000 to 20,000 mg per liter is respectively. That means that 11,000 से 20,000 जो है वो सोडियम और क्लोरीन मिक्स रहता है, उसमें आयन कंटेंट रहता है. कंपोजिशन ऑफ सी वाटर.
Seawater also contain magnesium and sulfur about 1400 and 2700 mg per liter respectively, and the pH value of seawater is between 7.5 and 8.4. that means it is not drinkable water, and this pH value shows how the water will be, it is in acidic form or it is in base form or it is in neutral form. The average pH value is taken as 8.2, and the seawater also contains some amount of carbon dioxide, that is CO2. If higher concentration of CO2 dissolve in seawater, then the pH may falls below 7.5. अगर एक्सेस अमाउंट जो सी वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटेन करता है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट पे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया तो जो उसका पीएच वैल्यू है वो घट के 7.5 आ सकता है. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सी वाटर ऑन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. क्या क्या इफेक्ट होता है सी वाटर का ऑन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर? लेट अस डिस्कस. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी वाटर रिएक्ट केमिकली विथ constituents of cement concrete with result damaging to the concrete structure in several way. The magnesium sulfate present in seawater reacts with calcium hydroxide of cement and forms calcium sulfate as well as magnesium hydroxide precipitation. जो मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट रहता है जो सी वाटर में, वो रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो सीमेंट में रहता है, और वो फॉर्म करता है क्या चीज़? कैल्शियम सल्फेट. एस ये मतलब कैल्शियम सल्फेट फॉर्म करता है और एज वेल एज क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट. ये दोनों क्या चीज़ से रिएक्ट करके फॉर्म करता है? मैग्नीशियम सल्फेट से, और रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से. मैग्नीशियम सल्फेट ऑल्सो रिएक्ट विथ hydrated calcium aluminate to form calcium sulfo aluminate. that is magnesium sulfate also, जो magnesium sulfate है वो और किससे रिएक्ट करता है? हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट से. क्या चीज फॉर्म करने के लिए? कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट. दिस फाइनल फॉर्मेशन आर प्राइम रीजन फॉर द केमिकल अटैक ऑन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. ये सारा रीज़न है जो मतलब केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन जब टेक्स प्लेस होता है तो वो मतलब स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है. द डिटोरेशन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बाय सी वाटर इज मोर ड्यू टू लीचेस रादर देन एक्सपेंशन ऑफ कॉन्क्रीट. ये क्या है कि मतलब जब कॉन्क्रीट में मतलब कॉन्क्रीट इफेक्ट किस कारण होता है सी वाटर से? ना कि वो लीचिंग के कारण, बट कंक्रीट में जब पानी से अटैच जब डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके कारण ये मतलब अफेक्ट. सल्फेट अटैक द कंक्रीट एंड cause expansion due to excess presence of chlorine in sea water and the swelling of concrete retarder. जो सल्फेट जो रहता है वो क्या मतलब कंक्रीट को अटैक करता है, वो क्या करता है? एक्सपेंशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन सी वाटर. जो पानी में जिस तरह से अभी बता रहे थे कि सोडियम और क्लोरीन उसमें रहता है, तो क्लोरीन का मात्रा रहने के कारण सल्फेट रिएक्ट करके अटैक करता है कंक्रीट पे एक्सपैंड होने के लिए, और वही एक्सपेंशन जो है उसका मतलब स्ट्रेंथ को घटाता है. Hence the erosion and loss of concrete takes place without such much showing much expansion. जो इरोशन है मतलब और लॉस ऑफ कंक्रीट जो है वो कब टेक्स प्लेस करता है? ये जब एक्सपेंशन होता है तब. The lime content present in the concrete also lost due to leaching. Both calcium and hydroxide and calcium sulfate are soluble in seawater. Thus will be result in increasing of leaching action. और ये ही जो कंटेंट रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट में, तो सी वाटर में ये प्रेजेंट रहता है, इसी कारण मतलब ये लीचिंग इंक्रीज हो जाता है, लीचिंग एक्शन. एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो
a for chemical factor for chemical attack. Higher the temperature, more will be the attack. जब टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के दिन में नॉर्मली जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो केमिकल रिएक्शन भी मतलब ज़्यादा होता है जो स्ट्रक्चर से मतलब जो स्ट्रक्चर पानी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट में है जो concrete is not 100% imperviously where seawater enter into the pores of the concrete and reaches the reinforcement and then corrosion will occur and this will affect the durability of the structure. Concrete जो है 100% मतलब वो पानी नहीं घुसने देने वाला नहीं है जो उसका मतलब छोटा छोटा पोरस स्ट्रक्चर होता है होल होता है कंक्रीट का उसमें से क्या होता है कि वाटर जो होता है उसमें घुसने के बाद रिइंफोर्समेंट पास पहुंचने के बाद उसको जंग लगाता है और जंग लगने के कारण जो ड्यूरेबिलिटी जो रहता है स्ट्रक्चर का लाइफ रहता है वो घटा देता है. Effect of seawater on concrete structure. As you can see here, this image tells about how the corrosion of reinforcement due to salty water when it comes in contact of seawater. Another case is that the concrete damage by abrasion. Seawater may carry a salt or silt, especially all the sets end of sea. When it forcefully contact with concrete surface, abrasion occur, and abrasion also occur due to mechanical force by wave action. This shows how the structure will get damaged when it comes with contact with seawater, and the corrosion will take place in reinforcement, and this will reduce the strength of the structure. So we should when we are concreting in sea type sea exposure structure, we should follow IS code book for getting better strength of the structure and for preserving the structure for longer days. As you can see in this image, this structure is affected by seawater and the reinforcement got corrosion and the structure life will be lesser than all the structure. As you can see here, this structure's life and this structure will have less durability than all other. Next is theoretical aspects. If we see about theoretical aspect of seawater contact with building, then if the concrete structure in building if the concrete structure is built in seawater, then the most affected area of structure is well above the higher water mark. The area below low water level and high water level is less affected, while the area which is continuously submerged under seawater is least affected. The reason behind this is when the seawater is forcefully contact the area above the higher water mark due to waves action, some salt water get deposited on the concrete pores. When this area is dried, the water will crystallize into salt and the particle will disturb the concrete and takes place. Similarly, when the water in the concrete porous is allowed to freeze in a cold climate, the concrete will expand and lost its durability. As you can see in this image, it tells about the inner structure will be not disturbed because there is less wave inside water, whereas the outer surface will be having more waves. So if the water waves is striking the structure, the salty particles which content in sea water will be depositing on the structure. ये स्ट्रक्चर पे डिपॉजिट हो जाएगा और टेम्परेचर वेरीज करेगा. जब टेम्परेचर अगर ठंडा हो गया तो वो मतलब सॉलिड फॉर्म होगा और उसमें एक्सपेंशन होगा. एक्सपेंशन होने के चलते उसका ड्यूरेबिलिटी घट जाएगा. अगर मान लीजिए कि गर्मी है तो वो
जो सॉल्ट इसका सरफेस पे बैठा है तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा और उसका ड्यूरेबिलिटी घटाएगा. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, this is the concrete and steel is placed here and physical abrasion is caused here, as you can see, due to water. Atmospheric zone is you can see in atmospheric zone, and this is the tidal zone where the effect is shown. Concrete effect, concrete is exposed with sea, and the effect of sea water is seen here on concrete, and the chemical deposition will be CaO, that is carbon dioxide, sulfate attack and chloride attack. And in submerged zone you can see inside submerged zone there will be no disturbance in the structure. So when where the structure upper structure which is in the contact of high waves, so this structure will get damaged. How to improve the durability of concrete in seawater? For increasing the durability of seawater, we should do according to these points. Let us discuss about the improvement of durability of the concrete in seawater. Cement with low C3A content should be preferred to mark concrete. जो सीमेंट कम मात्रा में C3A कंटेंट है उसको कंक्रीट बनाने का यूज़ में आना चाहिए, जो कांटेक्ट में है, पानी से कांटेक्ट में है जो स्ट्रक्चर. प्रिपेयर रिच कंक्रीट विदाउट लो वाटर सीमेंट रेशियो which makes the concrete impervious. Then the pores of in the concrete are very small and they cannot hold seawater. Result in the preventing of expansion by freezing of water and crystallization of salt in pores. The concrete is of low water cement ratio. To make it workable for concrete for construction, water reduced admixture can be added to the concrete, which recommended by ACI 318 and ACI 375. जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो लो वाटर सीमेंट रेशियो में अगर जब हम बनाते हैं तो वो कंक्रीट मतलब अच्छा रहेगा और वो काम करने के लिए जल्दी तैयार रहेगा और उसमें ज़्यादा पोरस नहीं रहेगा. अगर ज़्यादा पोरस नहीं रहेगा तो मतलब वो सी वाटर जब स्ट्राइक करेगा तो उसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं होगा, सॉल्ट होल्ड नहीं करेगा और वो पानी को होल्ड नहीं करेगा. तो जब पानी को होल्ड नहीं करेगा और सी सॉल्ट को होल्ड नहीं करेगा तो उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होगा सॉल्ट का और ना कि फ्रीजिंग होगा. तो एक उसका एक्सपेंशन वो अगर वो उसमें ना वाटर उसमें होल्ड नहीं करेगा तो उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा और उसका ड्यूरेबिलिटी नहीं घटेगा. उसी तरह से कंक्रीट का सीमेंट रेशियो अगर मतलब लो सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो रखते हैं तो उसका वो वर्कबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन विल बी मोर. एंड इफ़ there is a more water cement ratio, then we should use water reducing admixture, and that can increase the workability of concrete, and it is recommended by ACI 318 and ACI 357. The admixture should not contain chloride in any form, otherwise corrosion of reinforcement takes place. अगर एडमिक्सचर है वो कोई भी फॉर्म में क्लोरीन को होल्ड नहीं करना चाहिए. अगर होल्ड करता है एडमिक्सचर क्लोरीन को तो वो क्या करेगा, रेनफोर्समेंट में करोशन को, जंग को लेके आएगा. नेक्स्ट इज द एडिक्वेट कवर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर रेनफोर्समेंट in concrete structure to enhance the durability. ACI 357 recommend that cover of reinforcement bars should be shown in suitable in table. Atmospheric zone suitable to slate spray, that is 2 inches covering over reinforcement steel, and cover over post tension is 3 inches. Atmospheric zone subjected to salt spray is 2.5 mm covering, or cover over post tensioning is 3.5 inches covering. Submerged zone 2 inches covering, and cover over post tensioning is
3 inches covering. Cover of stripe is 0.5 inches less than above case, and in cover over post tensioning 0.5 inches less than above case. This means that जब भी आपका कोई भी अगर स्ट्रक्चर, मान लेते हैं एक कॉलम अगर आपका पानी के अंदर में है, अगर ये कॉलम पानी के अंदर में है तो अगर ये कॉलम पानी के अंदर में है तो अगर ये जो रड लग रहा है तो रड का कॉन्क्रीटिंग का जो भी स्पेस दोनों साइड में, चारों साइड में जो रहेगा ये रहेगा. अगर मान लीजिए कवर ओवर रेनफोर्स स्टील, तो जो कवर हमको प्रोड्यूस करना है फॉर एटमॉस्फेरिक जोन नॉट सब्जेक्टेड टू सेल्ट स्प्रे, उसके लिए 2 इंच का कवरिंग मतलब प्रोवाइड करना है. वही एटमॉस्फेरिक जोन सब्जेक्टेड टू सॉल्ट स्प्रे, तो ये हमको मतलब इसे हमको थोड़ा ज़्यादा इतना कवरिंग करना पड़ेगा, कवरिंग देना पड़ेगा. जो कवर रहता है, जो रेनफोर्समेंट को अगर कंक्रीट से अगर ये एरिया पूरा कंक्रीटिंग कर दिया जाए तो ये एरिया जो बचेगा वो रहेगा कितना, 2 कितना रहेगा, 2.5 रहेगा. ठीक है, आप लोग समझ सकते हो. Next we will see about how to improve the durability, then good compaction, as well as we have to well-made construction joint in structure helps the concrete structure to withstand against expansion causing sea water. जो अगर हम अच्छा से कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो मतलब उसका ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा और वो मतलब ज़्यादा दिन तक खड़ा रहेगा. यूज़ ऑफ पोज़लाना मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट इज़ गुड अगेंस्ट सॉल्ट वाटर. जो पोज़लाना मटेरियल है उसको अगर यूज़ करेंगे कंक्रीट में तो वो सॉल्ट वाटर के अगेंस्ट में अच्छा है. फॉर बेटर ड्यूरेबिलिटी, हाई प्रेशर स्ट्रीम क्यूर्ड concrete element can be used for construction of structure in marine condition. हमको बेटर ड्यूरेबिलिटी के लिए हाई प्रेशर स्ट्रीम जो क्यूर्ड कंक्रीट है वो एलिमेंट अगर यूज़ करते हैं मराइन कंडीशन के लिए तो उसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा रहेगा. हाउ टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS कोड 318 एंड ACI code 318 and ACI 357 recommend that the suitable air entering agent can be used to improve the effect of seawater in concrete, as well as the aggregate used for making concrete should be thoroughly washed and fresh water to reduce the chlorine ion concentration, and this will improve the durability of concrete. The summary of this lecture is all about concrete exposed to seawater. The coastal and offshore structure are always in the contact of seawater, and there the number of physical and chemical deterioration process takes place. So concrete structure effect by seawater require more attention. If we give more attention to the concrete structure which is affected by seawater, then the durability of the structure will be more and it can withstand more. I have referred from online source Ritu publication book, IS code 456-2000, IS code 10262 from 1982, and IS 10262 from 2009, and IS 383 1970, and MS book for clear understanding the concept. Thank you for listening this lecture. If you have any doubt, you can free to message me through WhatsApp or mail me.